China. Historical background. China has one of the world's oldest people and continuous civilizations. सर तो 1949 में फॉर्म हुआ था. 1949 में क्या हमने क्रिएट हुआ था? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, consisting of states and cultures dating back to more than 6 millennia. 1 millennium as 1000 years. 6000 years से ज्यादा पुरानी civilization है. People's Republic of China was established in 1949. Geographical area के बारे में क्या बता रहे हैं? China is situated in Eastern Asia, bounded by the Pacific in the east. It is the third largest country in the world. Second largest population अब. Second largest economy in the world. Third largest country area wise. Third largest country. इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से सेकंड लार्जेस्ट. प्लीज यार ध्यान रखना ना, मतलब सर अभी तो सेकंड लार्जेस्ट थी, अब ये थर्ड लार्जेस्ट कैसे हो गई? अभी एरिया की बात हो रही है. मैं कह रहा हूं ध्यान रखना, क्योंकि फिर कंफ्यूज हो जाओगे अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो. बहुत बेसिक्स हैं. बट नेक्स्ट टू कनाडा एंड रशिया विद एन एरिया ऑफ 9.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स. तो इंडिया, चाइना थर्ड लार्जेस्ट. इसकी बात हो रही है एरिया की. पॉपुलेशन एंड लैंग्वेज. चाइना इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड एज पर 2015 एस्टिमेट्स. तभी मैं कह रहा हूँ ये डेटा का मुझे ये लाइन लिखनी जरूरी है, क्योंकि बुक में एज इट इज है, लेकिन मैं आपको खुद ही बता रहा हूँ ना कि आपको इसके बाद ये पता होना चाहिए कि चाइना इज नॉट द मोस्ट पॉपुलस कंट्री एनी मोर. सर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया विच इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, ऑब्वियसली यू विल राइट इंडिया. जो पेपर चेक कर रहे हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है ना. विच इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, इज बोला ना. विच वॉज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन 2015. क्वेश्चन चेंज हो गया. सो प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली. विच इज तो मतलब प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है, तो आप प्रेजेंट टेंस में आंसर देंगे. तो 2015 एस्टिमेट्स के हिसाब से 1371 million people. Growth rate of population 0.5 per annum. Most languages in China belong to the Sino-Tibetan language family, spoken by 29 ethnicities. There are also several major dialects within the Chinese language itself. काम की बात, population as per 2015 estimate और growth rate of population 0.5% per annum. Important है. ग्रोथ रेट किसका? पॉपुलेशन का. इकोनॉमी. being one of the oldest civilization in the world, China has been one of the world's largest economy. It is the second largest economy, not the largest. After the establishment of People's Republic of China under one party rule, all the critical sectors of the economy, enterprises and lands owned and operated by individuals were brought under government's control. So China is the second largest economy in the. अब ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब उनकी स्कीम्स, उन्होंने क्या क्या पॉलिसीज अडॉप्ट करी, प्लीज इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉलिसी याद करनी पड़ेगी. पहला, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन. ग्रेट लीप फॉरवर्ड, व्हेन वाज इट इंट्रोड्यूस्ड? 1958. ईयर याद करना पड़ेगा. इन 1958 a program named the Great Leap Forward campaign was initiated by Mao to modernize China's economy. Purpose: to modernize China's economy. How? The aim of this campaign was to transform an agrarian economy into a modern economy through the process of rapid industrialization. तो फोकस किस पे था? इंडस्ट्रियलाइजेशन. तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड, modernization through industrialization, converting the agrarian economy, transforming the agrarian economy into a modern economy through industrialization.
So focused on industrialization. Under this program, people were encouraged to set up industries in their backyards. तो small scale industries को भी promote किया गया कि सब बनाओ, कुछ ना कुछ production करो. Also, in rural areas, communes were started. Commune is a system of collective farming under which people were made to cultivate farmland in China. That is, people collectively cultivated lands. कह रहा अलग अलग नहीं, मिलके करो, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. तो दो अलग चीजें हैं, promoting industrialization and in rural areas promoting communes. छोटे ग्रुप्स बना के कलेक्टिव फार्मिंग करें. In 1958, there were 26,000 communes covering almost all the farm population. Great Leap Forward campaign met with many problems. A severe drought caused a havoc in China, killing about 30 million people. When Russia had conflicts with China, it withdrew its professionals who had earlier been sent to China to help in the industrialization process. It was a major failure. The Great Leap Forward campaign was a major failure in the long run, which actually worsened the situation of Chinese people, especially the poor people. तो ये सक्सेस नहीं रही. फिर क्या आया? ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन. In 1965, Mao Zedong introduced the Great Proletarian Cultural Revolution, lasted from 66 to 76, under which students and professionals were sent to work and learn from the countryside. उनको भेजा दूसरी कंट्रीज में, जाओ नई टेक्निक्स, एफिशिएंसी अपनी बढ़ा के आओ, फिर उन टेक्निक्स को हम अडॉप्ट करेंगे. क्योंकि जो पहले बाहर वाले लोग आके हमें सिखाते थे, रशिया जो मेजर कंट्रीब्यूटर था इनका, उन्होंने तो कहा कि भैया अच्छा अब हमसे लड़ोगे, पहले हम तुम्हें सिखाएं और तुम हम ही से लड़ाई करोगे. तो फिर उन्होंने मना कर दिया उनको सपोर्ट करने से. तब अब तो दोस्ती हो गई है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है. ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, ये प्लीज ध्यान रखेंगे, मेन पॉइंट क्या है? To send the students and professionals in the countryside to learn from them, to work with them and learn from them. It was an even bigger disaster than the Great Leap Forward and caused massive economic slowdown and lack of political accountability, as it was, the purpose was Mao's bid to consolidate power and eliminate all kinds of criticism for himself. During both the Great Leap Forward and the Cultural Revolution, China went through famines and negligible change in their agrarian economy. Both were massive failures. सोचो फिर भी determination, मेहनत लगे रहे. सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ग्रोथ उनकी फिर काफी हुई. उसके बाद फिर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुई. ग्रेट लीप फॉरवर्ड 1958, Great Proletarian Cultural Revolution 1965, period 1966 to 76. Then reforms were introduced, new economic reforms. इंडिया में जो 1991 में हुई थी वही reforms की बात हो रही है. चाइना में अलग टाइम पे हुई थी. The present day fast industrial growth in China is not because of the Great Leap Forward campaign, is not because of the Great Proletarian Cultural Revolution. It can be traced back to the reforms introduced in 1978, also called the open door policy. तो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को क्या नाम दिया इन्होंने? ओपन डोर पॉलिसी. China introduced reforms in two phases, in different phases. Initial phase, reforms were initiated in agriculture, foreign trade, and investment sectors. In agriculture, commune lands were divided into small plots which were allocated only for use and not as ownership
टू द इंडिविजुअल हाउसहोल्ड्स। गवर्नमेंट ने कब्जा कर लिया, गवर्नमेंट ने कब्जा कर लिया और अलॉट कर रहे हैं फॉर यूज, नॉट फॉर ओनरशिप। तो द यूजर विल बी लाइक अ टेनेंट, ओनरशिप ट्रांसफर ही नहीं करी। They were allowed to keep all income from the land after paying stipulated taxes. So initially, reforms focused on agriculture, foreign trade, and investment sectors. In the later phase, reforms were initiated in the industrial sector as well. Private sector firms and township and village enterprises were allowed to produce goods. At this stage, enterprises owned by the government, known as state-owned enterprises or SOEs, were made to face competition. तो इंपॉर्टेंट है, रिफॉर्म्स कब इंट्रोड्यूस हुई? ओपन डोर पॉलिसी। इनिशियल फेज में क्या फोकस था, लेटर फेज में क्या फोकस था? नेक्स्ट, डुअल प्राइसिंग इन रिफॉर्म प्रोसेस। इंपॉर्टेंट है एक एक पॉलिसी। डुअल प्राइसिंग, सेम चीज के दो अलग प्राइसेस। आप कंज्यूमर हो या प्रोड्यूसर हो। आप प्रोड्यूसर हो तो आपके लिए तो ये रॉ मटेरियल है, हम आपको डिस्काउंटेड रेट पे देंगे ताकि हमारी इकोनॉमी फास्ट पेस पे ग्रो हो। आप कंज्यूमर हो तो हम डिफरेंट प्राइस चार्ज करेंगे सेम चीज का। डुअल प्राइसिंग। द रिफॉर्म प्रोसेस ऑल्सो इन्वॉल्व डुअल प्राइसिंग, मीन्स फिक्सिंग द प्राइसेस इन टू वेज। फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स were required to buy and sell fixed quantities of inputs and outputs on the basis of prices fixed by the government. तो आप प्रोड्यूसर हो, इंडस्ट्रियल यूनिट हो, प्रोडक्शन आपके लिए रॉ मटेरियल है, एक प्राइस फिक्स कर देगी गवर्नमेंट, उस प्राइस पे आपको मिल जाएगा। फॉर अदर ट्रांजैक्शंस, इनपुट्स एंड आउटपुट्स वर परचेज्ड एंड सोल्ड एट मार्केट प्राइसेस। उसमें गवर्नमेंट कोई सपोर्ट नहीं करेगी, जो मार्केट में प्राइस चल रहा है थ्रू द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो गवर्नमेंट सपोर्ट किन्हें कर रही है? प्रोड्यूसर्स को, फार्मर्स को, टू एनकरेज प्रोडक्शन। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है? व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज नेशनल इनकम? इट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर। जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी, जीडीपी उतना ज्यादा होगा। तो डुअल प्राइसिंग इन रिफॉर्म प्रोसेस, क्लियर? Special economic zones, SEZs, were set up in order to attract foreign investors. Special economic zones were set up. They introduced special economic zones along with relaxation of labor laws to lure and tempt Western companies to establish their companies and invest in China. Special economic zones. तो ये थी policies adopted by China. Brief है, इतना ही है। कोई याद होना चाहिए, डेट्स के साथ कंटेंट भी, सिर्फ डेट और नाम नहीं। प्लीज, उसका क्या था पॉलिसी का पर्पस, ये भी पता होना चाहिए।